Assalamu alaikum and welcome to the first part of our lecture. From here, I will be making very small videos. As I told you earlier, I will concise the videos to very small topics, so that if you want to watch the video again, then you have to just look for a particular topic in that video. आपको एक पूरी वीडियो में एक particular जगह ना ढूंढनी पड़े. That's why I am making small videos from here. So what we have to see, we were discussing Fourier analysis, and we already discussed, in fact, reviewed Fourier series and Fourier transform and some properties of Fourier transform. In fact, there are a few more things that we will be revisiting when we will be talking about discrete time Fourier transform and discrete Fourier transform. But before that, let's discuss a few basic signals, elementary signals in discrete time. So the first is unit step. On the top, you can see here the unit step function in continuous time. It is also called Heaviside function. We have 0 for t less than 0 and 1 for t greater than 0. You can see that it is defined at t less than 0 and it is defined at t greater than 0. T less than 0 being a very small value but a negative value, and t greater than 0 is very small value, for example 0.0000000001, but a positive value. So it has a discontinuity at t is equal to 0. Now what is unit step? Unit step is similar. We have 0 before n is less than 0, but it is 1 at n greater than or equal to 0. यानी यहाँ पर जो है वो n is equal to 0 पर हमारा फंक्शन डिफाइन है. और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन थी जिसमें एक प्रॉब्लम रहता है हमेशा, वो ये डिसकंटिन्यूटी आती है कि विद इन नो टाइम एक चेंज नहीं हो सकता. वो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं करता, बिकॉज फ्रॉम हेयर टू हेयर देयर इज एम्पल टाइम जिसमें वैल्यू 0 से 1 चेंज हो जाए. सो this has a discontinuity, or this is undefined at t is equal to 0, but this is defined at n is equal to 0. ये एक बुनियादी फर्क है यूनिट स्टेप फंक्शंस का continuous time में और discrete time में. Okay, the next is unit impulse. On the top you can see the unit impulse in continuous time, del t, and at the bottom you can see unit impulse in discrete time, that is del n. Del t or unit impulse in continuous time is also called direct delta function, while unit impulse in discrete time is also called unit sample. तो डेफिनेशन दोनों की एक जैसी है कि it is 0 for t not equal to 0, it is 0 for n not equal to 0, it is 1 at t is equal to 0, it is 1 at n is equal to 0. But there is again a big difference. The difference is that when we say 1 in case of what do you say, unit impulse function in time domain, continuous time. When we say 1, this is not the magnitude of the impulse, it is actually the weight of the impulse. Okay, why we call it weight? If you recall that it is actually derived from a rectangular pulse with area 1 but whose width is approaching 0, so its magnitude is approaching infinity but its area remains 1. So this is something ideal. It cannot be created physically. But when it comes to unit sample or unit impulse in discrete time,
It is 0 at all other samples, and at n is equal to 0, its magnitude is 1. It's not weight, it is magnitude, because it's not a change in no time. ये यहाँ पर 0 है. After that it has ample time to go to 1 and then ample time to go again to 0. Now we will see two basic and very important operations. They are the difference operation and the summation operation. In continuous time, we have differentiation and we have integration. But in discrete time, we have a difference and we have summation. Definitely, आपके पास अगर discrete data है तो आप differential apply नहीं कर सकते, derivative apply नहीं कर सकते. Derivative is only applicable to continuous time signals. So if you have discrete time, its counterpart in discrete time is the difference equation, that is yn is equal to xn minus 1. Similarly, the counterpart of integral in discrete time is summation. If we were integrating xt dt, now it is summation of xn. We will not be including dt because it is for integration purpose in continuous time, and sigma or summation does not anything like that because derivative का concept continuous time में ही आता है. Now let's see one example of difference and summations each. We know that del t, that is unit impulse, is a derivative of unit step function in continuous time. अब यहाँ ये बात आपको याद रखनी है कि by definition ut cannot be differentiated because it has a discontinuity at t is equal to 0. ठीक है? So this result which we have shown here is not a direct result, but this comes from the definition of what do you say, unit impulse, where we start with a unit ramp, and when we keep on reducing the ramp, that is हम टाइम कम करते जाते हैं जिसमें रैंप 0 से 1 बढ़ रहा होता है, तो हमारा जो डेरिवेटिव है यूनिट रैंप का वो इम्पल्स बनता जाता है. किस वक्त? जब यूनिट रैंप खुद यूनिट स्टेप नजर आने लगता है. सो इट वाज एन approximation, not exact definition, not exact derivation, but we use it in signals that del t is a derivative of ut. So similarly, in discrete time, we have del n. What is del n? Unit impulse in discrete time, or we say unit sample. So d by dt of ut will now become un minus 1. Likewise, if we were integrating del t to get ut, that is, if unit impulse can be integrated to get unit step, then unit impulse in discrete time or unit sample can be summed up to get unit step in discrete time. Okay, the next signal is the sinusoidal signal. Again, at the top we can see the cos wave in continuous time, and we can see the cos wave here in discrete time. T stands for continuous time and stands for the sample number. So you cannot see much difference in the equations here at the top and here at the bottom. Here we have written omega naught, and we know that omega is 2 pi f, so we have replaced here with 2 pi f naught. Here we have used omega naught n. Here we have got omega naught t. So the only difference is n and t. But that difference is very big and major difference, and that's why the properties of continuous time sinusoid and discrete time sinusoid are entirely different. बहुत बड़ा फर्क है continuous time sinusoid और discrete time sinusoid में, और जो फर्क इनमें है
डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में भी जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इन कंटिन्यूअस टाइम एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इन डिस्क्रीट टाइम, वही फर्क वहां पर भी आ जाएगा, because complex exponentials and sinusoids and cosinusoids are very much related by Euler's theorem. So what is the difference? In fact, it's not just one difference. There are two major differences. The first difference is a discrete time sinusoid is periodic only if its frequency is a rational number. So very important. जब हम continuous time sinusoid की बात करते हैं तो वो हमेशा periodic होता है and we know it. But discrete time sinusoid may or may not be periodic, और इसकी periodicity के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी जो frequency है वो एक रैशनल नंबर हो, तो इंटीजर्स का डिवीजन का रिजल्ट हो, जैसा कि हम यहाँ पर राइट साइड पर देख सकते हैं. सो लेट्स सी. ओके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक्स एन और एक्स एन प्लस कैपिटल एन बराबर हो, यानी कि हमारा सिग्नल एक खास नंबर ऑफ सैंपल्स के बाद अपने आप को रिपीट करे, जो यहाँ पर क्या है, कैपिटल एन है. Now if my signal is 2 pi cos of 2 pi f naught n, तो डेफिनेटली अगर मैं चाहूं कि जी एक्स एन प्लस कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इस एन की जगह एन प्लस कैपिटल एन पुट कर दूंगा एंड इट विल बिकम cos 2 pi f naught small n plus cos 2 pi f naught capital N. Now this is cos alpha plus beta, which is equal to cos alpha cos beta. Sorry, this should not be plus, this should be minus. So cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. अब अगर पीरियोडिसिटी है तो xn और x प्लस n इन दोनों को बराबर होना चाहिए, और इन दोनों को बराबर होने के लिए क्या जरूरी है, cos 2 pi f naught n इस पूरी एक्सप्रेशन के बराबर हो, और ये उसी वक्त हो सकता है जब ये टर्म 1 हो जाए, और जिस वक्त ये टर्म 1 होगी, cos जब भी 1 होता है साइन की वैल्यू 0 हो जाती है, ये टर्म 0 हो जाएगी, यानी सेकंड टर्म खत्म हो जाएगी. सो यही बात मैंने यहां लिखी है. This term should be equal to this. If we have periodicity, it means this term should be equal to 1 and this term should be equal to 0, and this would happen at 0 degree, 360 degree, 720 degrees and so on. And if I say in pi radians, then it will be 0 and 2 pi and 4 pi and 6 pi. So in general it will become 2k pi. So at all values of angle that is that are integral multiple of 2 pi, xn plus n and xn will become equal. So if we see here, this 2 pi will be cancelled, and what remaining is that f naught is equal to k over n. तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो साइनोसॉइड जो है वो व्हाट डू यू से पीरियोडिक होगा, अदरवाइज इट वोंट बी पीरियोडिक. Okay, now the second property that makes the discrete time sinusoid different from continuous time sinusoid, and that is that if we have two discrete time sinusoids whose frequencies are separated by an integral multiple of 2 pi. For example, एक की frequency है ओमेगा नॉट और दूसरे की frequency है ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई, या उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट प्लस
4 पाई या उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट प्लस 6 पाई। ठीक है जी। तो उन दोनों साइनोसॉइड्स में कोई फर्क नहीं होगा, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपने 2 पाई बढ़ा दी है। ठीक है, 2 पाई टाइम्स नहीं है ये, राइट, 2 पाई बढ़ाई है। यानी अगर एक फ्रीक्वेंसी 4 थी तो दूसरी अब 6 पाई। ठीक है, नॉट नॉट 6 पाई, 4 प्लस 2 पाई। ठीक है, अगर एक 4 थी तो फिर अगली 4 प्लस 4 पाई। ये सब आपस में एक दूसरे को, या मतलब ये सारी साइनोसॉइड्स बिल्कुल एक जैसी नजर आएंगी देखने में। कैसे? मैथमेटिकली वी कैन प्रूव इट। ओके, इफ वी हैव अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई। ठीक है, यहां आप थोड़ा सा ख्याल रखें, दिस इज ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई, यानी ये पूरी टर्म जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये कहीं ऐसा ना समझ लें आप कि ये उसका जो फेज एंगल होता है वो है, क्योंकि जब फेज एंगल होता है तो वो इस तरह लिखा होता है ओमेगा नॉट एन प्लस समथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 पाई, राइट। तो यहां पर फेज एंगल मौजूद नहीं है। ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई इज टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइनोसॉइड। ठीक है, so again we can write it as cos omega naught n plus cos 2 pi n. Okay, sorry, cos omega naught n plus 2 pi n, this is it, right? Cos alpha plus beta, so it will become cos alpha, that is cos omega naught n, cos beta cos 2 pi n, minus sin alpha sin omega naught n, sin beta sin 2 pi n. ठीक है जी। नाउ cos of 2 pi and its integral multiple, ये हमेशा 1 देगा, आपको 1 मिल रहा है। sin 2 pi और उसका इंटेग्रल मल्टीपल हमेशा आपको 0 देगा। तो बचेगा क्या? cos ओमेगा नॉट। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड के दो cos वेव्स जिसमें से एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट हो और दूसरे की ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई हो, दोनों cos वेव्स बिल्कुल एक जैसी नजर आएंगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में बहुत ज्यादा काम आना